Hello viewers, welcome to the channel. So this is a brief overview of the new scalping app that is called Bolt. So this is Bolt 1.0 and this will be released for both Finvisia and Flat Trade for the initial days. तो इस ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं एक बार देख लेते हैं हम. सो बेसिकली इट इज़ ओनली फॉर इंडेक्स ऑप्शंस. जो भी इंडेक्स ऑप्शंस में एनी वन हु इज़ एन एक्टिव स्कैल्पर वो इस ऐप का फ़ायदा उठा सकते हैं. बेसिकली इट्स ए टर्मिनल इन इटसेल्फ, क्योंकि इसमें सब कुछ है. आपका पूरा ऑप्शन चेन ही है इसमें, एक तरह से बोला जाए तो. आप यहाँ पे बैंक निफ्टी है, राइट. यू कैन सी दैट बैंक निफ्टी इज सिलेक्टेड इन इंडेक्स. Index has three options and the bank nifty is selected by default and the ATM is selected by default as well. So what if you want to change the strike price, what do you have to do is, because trade लेने से पहले आप ये देखना चाहेंगे कि आपका कॉल का या पुट का प्राइस क्या चल रहा है. फॉर दैट यू डोंट हैव टू रेफ़र टू द ट्रेडिंग टर्मिनल या फिर वेब बेस्ड टर्मिनल को रेफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू कम हियर, सिंपली स्क्रॉल, ओनली स्क्रोल, दैट्स इट. आप एक स्क्रोल करो एंड योर कॉल एंड पुट ऑप्शन प्राइसेस ऑफ दिस स्ट्राइक विल बी अपडेटेड लाइव हियर. ओके, एंड ऑल्सो यू कैन स्क्रोल हियर एज वेल. फिन निफ्टी आ गया, फिन निफ्टी का स्पॉट का कोट यहाँ पे आ गया एंड फिन निफ्टी के जो अभी प्राइसेस चल रहे हैं, टुडे इज़ एक्सपायरी, हैंस the call option is at ATM call option is at 6 rupees and the put option is at 29 rupees. And similarly you can go for Nifty as well. It is quite dynamic. In a way you can say that you have access instantaneous access to all three option chains. आप एक trade bank Nifty में लो, just do a scroll here and next minute you can take a trade in Nifty and the next minute you can take a trade in बैंक निफ्टी. एंड यहाँ पे बाय एंड पुट जो होता है, वी डोंट हैव टू कोई एक्सेल फाइल ओपन करके वन टाइप करो, एंटर करो, वो सब नहीं करते हम. यू जस्ट हैव टू बाय कॉल एंड बाय पुट, जस्ट क्लिक हियर. और देर आर शॉर्टकट्स एज वेल. बाय कॉल इज़ फॉर if you want to buy call, then you can simply press the up arrow and the buy put will be the down arrow and the exit button will be space. So there is no concept of selling here. It's only for long options. You buy, you buy call या फिर आप buy put करो and then you exit. So buy call is up arrow, buy put is down and exit is space bar. और क्या क्या फीचर्स एक बार बता देता हूँ आपको. You have the option to place smart limit orders as well. Smart limit orders क्या है? LTP के थोड़ा नीचे. इन द लॉन्ग रन दिस फीचर विल एंड अप सेविंग यू अ टन ऑफ मनी, बिकॉज हम कभी भी जब मार्केट ऑर्डर में एंटर करते हैं तो एंट्री के बाद it always happens that the price slightly moves down, right? There is lot of volatility in options. So price most of the times it will come slightly below your entry price, right? जब आपका MTM नेगेटिव में दिखाएगा. So the limit order feature allows you to set a limit buffer. तो वो लिमिट बफर 20 पैसे हो सकता है एंड 50 पैसे हो सकता है, 2 रुपये, 3 रुपये, डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल प्रीमियम एंड द वोलेटिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर ट्रेडिंग. यू कैन चेंज दैट बफर सो दैट आप सपोज 300 रुपये का बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीदने जा रहे हो, देन इट मेक सेंस टू पुट अ बफर ऑफ 3 रुपये या 4 रुपये का बफर आप डाल सकते हो. These few savings that you do by placing limit order and not by using the liquidity that is available in the system, these small gains add up in the long run. So buying using limit orders in the long run is much more cost effective than directly placing a market order and using up the liquidity. For example, अभी प्राइस चल रहा है कॉल का, फिन निफ्टी का कॉल का चल रहा है प्राइस 4 रुपीज़, राइट. 4 रुपीज़ इज़ करंटली द प्राइस इज़ अराउंड 5 रुपीज़. आई वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर विच इज़ अराउंड 0.2 या फिर 1 रुपी, 1 रुपये नीचे. यू कैन सी द अमाउंट ऑफ वोलेटिलिटी हेयर. सो आई जस्ट वॉन्ट टू प्लेस अ लिमिट ऑर्डर विच इज़ 1 रुपीज़ बिलो द current LTP of the call. I am changing the tab to orders here now.
Okay, so these are all the testing orders. अभी मैं इसका live testing कर रहा हूँ and I am placing a lot of orders and lot of combinations of exit and entries. I am testing everything. So let us say 1 रुपये के नीचे इससे 1 रुपया नीचे हमको ऑर्डर प्लेस करना है, तो देन एंड यू द मिनिमम क्वांटिटी 0.2 एंड लेट अस से 1 रुपये के नीचे, इससे 1 रुपये नीचे, सो दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक ज़ीरो, राइट? सो द मार्केट इज़ फॉलिंग डाउन, सो it doesn't make sense here right now. तो एक काम करते हैं, let us place orders for this strike, right? And if I place here, इसका थोड़ा बफर बढ़ा देते हैं, let us say 4 rupees. So 16 rupees is the LTP and the buffer is 4 rupees. So our limit call will be placed around this minus this, right? So place limit, and you can see this is an open order right now. So if I want to cancel this open order, okay, if I want to cancel this open order, I simply have to press L cancel. Once you place the L cancel, the order is cancelled. So ये web based terminal, it is taking some time to get updated, so but you get all the instantaneous messages here, placing limit order at 19.4 and cancelling all open limit orders. Basically you can place multiple limit orders as well, and the only caveat is that the symbol should be same. So आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने लिमिट का कॉल पे एक लिमिट डाला, देन पुट पे एक लिमिट डाला, या फिर स्ट्राइक चेंज करके लिमिट डाला. तो डोंट चेंज द सिंबल, पिक a symbol, hit it, exit, then you can change or switch to another symbol. And what else? Partial exit is like आपने suppose the quantity that you are buying is suppose 200 and you want to exit 80 quantities, so you can change it to that, and वो यहीं से ही लेता है. The quantity for exit is also picked up from here only. So suppose your total quantity is 200 and you want to exit 80 of that, change it to 80 and partial exit. And let us come to the most exciting part, and that is SL methods. So there are 3 ways of SL. Entry का आप देख लो, तो entry में आपको there are 2 ways to enter. So one is by buying at market and buying at limit, but SL method में there are 3 options, right? There are 3 options to pick a SL method. So first is points. The point is like as you can see, जब मैं point select कर रहा हूँ, the L limit orders are being cancelled. तो ये अभी मैंने नहीं दिया है. There are some issues in implementation of this combo of entry and exits. आप limit में enter कर रहे हो and points में exit कर रहे हो. This is points is like your SL will be placed in the system, right? I'll make an entire user manual for this, क्योंकि there are many combinations and many conditions in this application. So I'll make an entire user manual for this, so that you can read it thoroughly and then only use it. And yeah, so if you put it in points, then once you buy a call या फिर कोई भी आप instrument buy कर रहे हो, it will be placed in the system, and trail will be like simple. ये तो पहले फ्री वर्जन में भी था. This is the trailing points, this is the stop loss points. आप एक बार स्टॉप लॉस प्लेस कर दोगे 5 रुपये नीचे. सो दिस इज़ इन पॉइंट्स एज वेल. सो लेट अस प्लेस एक ऑर्डर प्लेस करके दिखा देता हूँ आपको मैं. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट वंस यू प्रेस एनी थिंग हियर, दिस डजंट गो बैक. एज यू कैन सी, दिस इज़ ए नॉर्मल विंडो, राइट? आप एक नॉर्मल विंडो को अगर प्रेस करोगे, या इफ़ यू प्रेस इन द बैकग्राउंड विंडो, द नॉर्मल विंडो गोज़ टू द बैकग्राउंड, राइट? आई एम प्रेसिंग इट, इट इज़ गोइंग, बट दिस इज़ नॉट गोइंग. दिस द बोल्ट विंडो विल ऑलवेज स्टे ऑन टॉप, ताकि आप इसको चार्ट के ऊपर लगा के भी ट्रेड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द चार्ट, यू प्लेस इट हियर एंड आप यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, एंड यू कैन सिंपली मूव इट अराउंड एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, सो या दिस इज़ ऑल्सो ए ग्रेट थिंग दैट इट डजंट गो टू बैकग्राउंड. ये हमेशा ऊपर ही रहता है. आपका क्या पोजिशन चल रहा है, यू कैन ऑलवेज सी दैट. एंड वॉट एल्स, या अभी आपको एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाते हैं. दिस इज़ कॉल, राइट? सो लेट अस ट्राई टू प्लेस इन पुट, बिकॉज मार्केट इज़ काइंड ऑफ फॉलिंग. सो ये मैं 24 रुपये का पुट बाय कर रहा हूँ, एंड द पॉइंट्स इज़ 5 रुपये का मैं दे रहा हूँ स्टॉप लॉस, राइट? बाय पुट. सो नाउ द पुट इज़, यहाँ पे आपका MTM है. दिस इज़ MTM फॉर द करेंट ऑर्डर, राइट? एंड दिस इज़ द PNL फॉर द, इनका पूरा सम दिखाएगा. सो इफ़ आई एग्जिट हियर,
So the latest trade was executed at executed at execution price was at, यहाँ पे आपका entry price है, exit price है, and this is the sum of all the P&Ls, and this is the MTM of the current trade only. Okay, so in your conventional trade terminals what happens is that आपने अगर एक ही सिंबल पे बार बार एंट्री एग्जिट करते हो, then it only shows you the overall P&L of that symbol, right? In this case it doesn't happen like that. It is trade to trade basis. For example, I have taken 13 trades today. Most of them are testing trades, and once you are in a trade, this will start to reflect your current P&L, right? Your current M2M of the open positions. And once you are exited, this will be resetted to 0. ये 0 हो जाएगा आपका एक ट्रेड खत्म होने के बाद, and the resulting profits or loss will be added here. Okay, this is quite unique because ऐसा I haven't seen any terminal which has this kind of facility. And this is the messages, and यहाँ पे आपको last 20-30 messages दिखाई देंगे. I will increase it to 50. So the last 50 messages you will be able to see here. And and auto trail क्या है? Auto trail में आप stop loss देंगे and the trailing points देंगे, right? Trailing points is like आपका अगर entry से 2 point ऊपर गया तो stop loss भी आपका 2 point ऊपर जाएगा. Okay, so this is kind of a buffer for the trailing. And auto trailing में भी है. Auto trailing T is like this is your target price. इसमें आप टारगेट भी देख सकते हो. दिस इज़ विदाउट टारगेट, द टारगेट इज़ ओपन एंडेड, एंड यहाँ पे आपका टारगेट है, यहाँ पे टारगेट नहीं है. एक तरह से आप ये कह सकते हो कि दिस इज़ लाइक ए कवर ऑर्डर एंड दिस इज़ लाइक ए ब्रैकेट ऑर्डर, राइट? सो बट द थिंग इज़ एवरीथिंग इज़ प्लेस्ड इन द मार्केट. आपका यहाँ पे लाइव चेकिंग होता है. It's once you click this and you are in a trade, either आप लिमिट में एंटर कर रहे हो या फिर बाय मार्केट पे एंटर कर रहे हो, it gets activated. The limit का flow is also quite interesting because आप एक बार लिमिट प्लेस करोगे, right? Once the limit is placed, it starts to check whether your limit order is executed or not. आपका एक बार अगर लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, then only starts to trail based on your entry price. So once you are in the trade, this is activated. The trailing, both of these are activated. And इसमें आपका सिस्टम पे SL नहीं रहता है. The system, it is dependent on the WebSocket data, so the stop loss will not be there in the system in this case. Okay, and for points, this will be in the system. The SL will be placed in the exchange if you select points. Okay, and only thing is that this combo of entry and exits is not activated right now. I'm working on this. एक बार हो जाए तो then if possible then I'll activate this as well. And what else? हाँ, इसमें आप ये भी कर सकते हो कि once you are already in a trade, the free version doesn't allow you to enter again and again, right? So इसमें क्या है कि once you are already in a trade, आप फिर से buy call या buy put कर सकते हो. You can press it again and again. Suppose I have selected points here, right? So if I press it once, आपका stop loss लग जाएगा based on the points you have selected. If you press again, what happens is that it takes another buy and it modifies the stop loss and increases the quantity. उसका बस quantity बढ़ जाएगा, right? It will not place another stop loss if you are pressing buy call again and again. It will only keep increasing the stop loss quantity. So I think that's about it. And I will make a documentation for this app as well, so people can go through the documentation thoroughly and then only use this. And that's all. And those who are interested, they can reach out to me. This is not yet released yet. I want to do more testing. I have been testing it since एक week से इसका testing चल रहा है. It's almost completed. थोड़े बहुत finishing touches देने हैं इसमें. Once it is done, I will upload few live trading videos, and so that you can see in the live market how the tool performs. And a lot of work has gone into this, and I can confidently say that this is the best scalping tool in the market right now. So that's all, guys, and I hope to see you soon. And let me know how do you like the interface, or if you have any feedback around
the features, you can also let me know. Take care and goodbye. I'm just calling to say I